So, Michael, once again, warm welcome to USANA India. Thank you so much for all the support that you're providing us, guiding us. All of us here are very hungry for the knowledge, your insights, and your expertise. And we've always heard great things about you from Dan Whitney, from David, from everyone that we've met. And we said, yes, we need all the guidance that Mike can give us. So, thank you, Michael, once again. No, no problem. Thanks for having me on. I appreciate it. So yeah, I'll jump into it right away. I'll just do like a brief intro. I know that some people were on the last call that we did, and some people are probably meeting me for the first time. I'll make a long story very short. I've been working with USANA now for over 20 years, and it's been an amazing journey. So some of you guys are seeing this. It's funny when people say like, "Yeah, I've been doing this for a long time. I've been doing it for 3 years." I'm like, try 20 years, okay? Yeah, if you're 3 years in, you're brand new. If you're 2 years in, you're brand new. You're just born in this business. Okay, there's a long, long journey ahead. And there will be some ups and downs, but I think the best thing I can do to assist people on their journey is to give them training and to prepare them for what's to come. My story in USANA is prior to working here, I had a regular job, things like that. But the one thing I want to focus on is I had a lot of goals and aspirations, right? I think everybody does, right? I think people want to do great things in their life. If you ask somebody like, "What are your goals and dreams?" They'll be like, "Oh, I want to travel the world," or "Oh, I want to do this." But it sounds like a goal and a dream. It's not really something that you're focusing on and working towards. And I think that that's kind of where I was prior to USANA. I was in a place where I was dreaming, but I wasn't setting goals. And now I'm setting goals. I'm not just dreaming about stuff, like I'm actually setting goals. Like I want to see the entire world. That's my goal. I want to see 196 countries. That's my goal. And every now and then I'll chip away at it. I'm at about 118 countries right now, still going. So, And Michael, I think go I've ahead. now received three, four Yeah, requests. for sure. Go for it. Go for it. Yeah, I'll begin from there. Just this part of it. माइकल यहाँ पे तकरीबन 20 साल से यूसाना के साथ हैं और वो कहते हैं बहुत सारे लोग नए होते हैं जो कि 3 साल होते हैं 2 साल होते हैं वो ब्रांड न्यू होते हैं एंड माइकल कह रहे हैं मुझे 20 साल हो चुके हैं एंड इज जस्ट उनको ये जर्नी बहुत पसंद आ रही है और वो कह रहे हैं सबके अपने गोल्स होते हैं और ड्रीम्स होते हैं यूसाना के साथ उनका गोल उनका ड्रीम है टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड 186 कंट्रीज हैं और वो सब घूमना चाहते हैं So one thing that, since we're talking about objections, is when I ask people, "Hey, what's a goal?" and they say they want to travel, I say, "What's holding you back?" And जब usually कोई they'll उससे give. पूछता है सॉरी सॉरी माइकल No, मैं I'm sorry. Yeah, go ahead. Go ahead. Go ahead. या तो वो ये कह रहे हैं कि आपका गोल क्या है तो लोग उनसे जैसे कहते हैं ओ मुझे भी पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है तो वो उनसे पूछते हैं ऐसी क्या चीज है जो आपको होल्ड बैक कर रही है जो आपको रोक रही है Yeah, and the objections are always very similar. I don't have the time, I don't have the money, or I can't do it. तो लोग ज्यादातर यही कहते हैं या तो मेरे पास समय नहीं है पैसा नहीं है या मैं इसको कर नहीं सकती या कर नहीं सकता Yeah, so it sounds very similar to the objections we get in why people won't do the business, right? They don't have the money, they don't have the time, and they don't think they can do it. बिजनेस के लिए भी सेम चीज ही होती है उनके पास समय नहीं है पैसा नहीं है या वो कर नहीं सकते So what I realize is that overcoming objections, it's not just for overcoming objections in this business, but it's literally overcoming objections for everything in life. There's always going to be objections to why we do things. सिर्फ ऑब्जेक्शन हर जगह होते हैं लाइफ में होते हैं सिर्फ बिजनेस के ही ऑब्जेक्शन नहीं है जो भी आप काम कर रहे हो उसमें ऑब्जेक्शंस आते हैं Yeah, and I think the objections are really holding us back from doing the things that we want to do, from whether it's traveling or starting a new business or exploring a relationship or just anything. Like it's the objections that hold us back. So
I want to help you guys overcome objections in your business, but maybe even just objections that are holding you back from doing the things that you want to do. सो ये ऑब्जेक्शंस ही हैं जो आपको वो चीजें करने से रोकते हैं या बिजनेस करने से यू नो समय लगता है आप कर नहीं पाते। तो आज हम माइकल हमें ऑब्जेक्शंस के बारे में सही से बताएंगे, राइट? Yeah, so the first thing is, just basic stuff, right? We'll go over a lot of things, but with overcoming objections, we can talk about this for days. There's a lot of material. So I just want to cover basics first, and then we can always do more sessions later. But I want to give you guys like the fundamentals first. सो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। और ये काफी सारे सेशंस में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन आज जो शुरुआत करेंगे माइकल वो बेसिक्स से शुरू करेंगे। Yeah, so the first thing is understanding why we have objections, as you can see on the screen. I'm going to teach you a trick called, or a trick, it's an approach called feel, felt, found. I think it's a good method on how to close. Build strong core beliefs for selling USANA, some basics, and then address the most common objections with confidence. That's what we're going to cover today. तो आज के टॉपिक्स आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे ऑब्जेक्शंस होते क्यों हैं। एक ऐसी अप्रोच जिससे आप ऑब्जेक्शंस को आसानी से हैंडल कर सके उसे फील फेल्ट फाउंड मेथड कहा जाता है। एंड माइकल उसको काफी यूज भी करते हैं। आपका बिलीफ जो यूसाना में जो विश्वास है उसको स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। क्लोज कैसे करना है कॉल को, एंड देन मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं विद full confidence. Yes. Yeah. Okay, so first one is why prospects give objections, right? So the reason why is lack of information. So usually you'll see people ask more questions because they don't have enough information. They're afraid of making the wrong decision. Their past negative experience will give them an objection. Time or financial concerns, or misunderstanding the value. So keep in mind, objections are buying signals in disguise. When people are asking questions, it means they're interested. So जो सबसे पहले जो प्रोस्पेक्ट्स हमारे ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं कि दिमाग में ये रखना है कि एटलीस्ट उनका इंटरेस्ट है इसलिए वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अब वो क्यों रेज कर रहे हैं ये ऑब्जेक्शंस, शायद उनको पूरी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें ये लगता है मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, राइट? और पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है, हिस्ट्री ये कहती है, तो फिर से ये हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स समय के कमी होती है, फाइनेंशियल कंसर्न्स होते हैं, मतलब पैसे की कमी होती है। और कई बार जो चीज हमें प्रेजेंट करी जा रही है उसकी शायद हम वो लोग वैल्यू नहीं समझ पाते, उस वजह से भी ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि क्या इसकी रियली ये वैल्यू है कि नहीं है। बट ध्यान रखिएगा ये बाइंग सिग्नल्स हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो सवाल तो पूछ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट तो है। Yeah, awesome. So I think that if you're gonna, when you get objections, sometimes people get frustrated, right? They're like, oh, they're asking me a lot of questions. That's good. That's good. If they weren't asking questions, that means that they're not really interested. So let me show you an approach. Let's say you have a prospect and they ask you, hey, I have a question about USANA and this. I have a question about the compensation plan. Let's say you have a prospect that's asking a lot of questions. What I like to do is I like to say, hey, I'm glad you're asking all these questions. That shows me that you're really interested. Let me answer. तो लोग जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम लोग ज्यादातर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोचते हैं अरे इतने सारे सवाल पूछ लिए, वेरी डिफिकल्ट है ना। लेकिन सबसे पहले जो आपको जवाब देना है, ओ आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये सवाल पूछा, कि एटलीस्ट आप यूसाना में इंटरेस्टेड हैं। Yeah, sometimes when you say that, they'll stop asking questions. They'll be like, oh, I don't want them to think that I'm too interested. So they won't ask anymore. But it's a good way to kind of turn that situation into your advantage by saying that. Like, hey, I'm glad you're asking all these questions. That means you're really interested. तो माइकल ये कह रहे हैं कि कई बार
लोग हो सकता है आप ये बोले और वो फिर सवाल पूछना ही बंद कर दे, ये भी हो सकता है। बट नहीं, ये फिर भी ज्यादातर ये पॉजिटिवली आपके लिए काम करेगी। आई एम सो ग्लैड आपने ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इससे आपका इंटरेस्ट नजर आ Yeah, it helps you take control of the conversation again and maybe stop them from asking too many questions. Because sometimes people ask 20 questions, and by the time you answer the 20th question, they don't even know why they asked the first one. So learn to kind of like put a pause on people when they're asking too many and just answer them specifically. Yeah. तो कई बार क्या होता है, लोग बहुत सारे सवाल पूछ जाते हैं, 20 सवाल तक पूछ लेते हैं, और फिर वो ये भूल जाते हैं उन्होंने पहला सवाल क्यों पूछा था। तो लोगों का सवाल पूछना अच्छा होता है, लेकिन सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहे एंड आप उसको पॉजिटिवली मैन्यूवर कर सकें, राइट? तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. Another good thing you can say during that time is, let's say they ask a question or two. I would ask, is there anything else holding you back from making a decision today? सो ज्यादातर जो माइकल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे उन्होंने अगर ये सारे क्वेश्चन जो कि इस समय स्लाइड पे लिखे हैं, इसके अलावा भी वो ये पूछते हैं कि इन सब के अलावा कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। Yeah. So let's say they ask three questions. They say, I have questions about the pricing. I have questions about the compensation plan. Say, that's great. Besides those questions, are there anything else that's holding you back from moving forward today? सो अगर उन्होंने बोला अरे मेरे को प्राइस से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, या मेरे सवाल मुझे कॉम्पेंसेशन प्लान में ये क्वेश्चन है, तो उसके बाद आप पूछिए क्या इनके अलावा कोई ऐसी चीज है जो आपको आज आगे बढ़ने से रोक रहा है। Because as soon as you answer the last question, you don't want to stay quiet. You answer the last question and say, okay, great, let's place your order. Okay, great, let's get you signed up. You don't want to answer the question and say, okay, there. सो जब आपने आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे दिया, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, ओके लेट्स साइन यू अप, हम आज ही आपको एनरोल करते हैं, या हम आज ही आपका ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये नहीं This कि example, अच्छा oh, ओके या। this example that I want to give about John going to school, John is an imaginary person, okay? He's not somebody that I know. I'm sorry. He's not someone that I know. But this example of John going to college is because I know that people, let's just say here in the United States, and I'm sure in India it's the same. Do you think that education is important? How important is education? मुझे ये ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, क्या आपके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? माइक यू ओनली सी यस यस यस, आई एम श्योर ऑन दैट। Yes. Okay. So if you knew a child who was 16 years old and they were finishing the last year or two of high school before they go to college, and they tell you, I don't want to go to college. It's too expensive. I can make money without my degree. School is boring. I don't know what I want to study, and I can learn stuff online for free. If they were saying all of this, how would you overcome the objection? तो माइकल यहाँ पे पूछ रहे हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि 16 से 18 साल, जो कि इंडिया की एज है, कि हम स्कूल फिनिश करके कॉलेज में जाते हैं और वो हमसे ये कहते हैं ओ कॉलेज बहुत महंगा है, मैं ऐसे ही पैसे कमा लूंगा ये सारे काम करके, फ्रीलांसिंग कुछ करके, डिग्री की मुझे जरूरत नहीं है, कॉलेज बहुत ही बोरिंग होगा और मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या पढ़ना है, या मैं फ्री ऑनलाइन के बहुत सारे कोर्सेज करूंगा। तो आप क्या उन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे? Yeah, and I know that it's not the exact same thing, but it's a similar concept. What happens is as adults talking to a child who's 16 is we're going to use something and say, "Hey, school is important. It's expensive, yes, but it's worth it. It's an investment. You're not spending money. You're investing money in your education." Right? That's what you would say, something like that.
सो ज्यादातर पेरेंट्स एंड आई थिंक काफी लोगों ने चैट पे भी इस पे लिखा है कि हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, बिकॉज कॉलेज जाना एंड जो है हमारी तरफ से और उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। या तो इसलिए Right. आप उनको ये बताएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप अपने फ्यूचर में, एंड आई एम श्योर सभी पेरेंट्स यही बात करेंगे। Right. So that means that, see, you're explaining there's no guarantee. Is it possible that somebody gets their education, they finish their degree, and they don't make a lot of money? Is that possible? क्या ये पॉसिबल है? और लोग ये पीपल आर राइटिंग यस कि उन्होंने डिग्री खत्म कर ली और एकदम से पैसे नहीं बनाए। क्या ये पॉसिबल है? सो पीपल विल से हियर इन इंडिया यस माइकल इट इज Okay. नॉट So that means, इमीडिएटली आफ्टर द डिग्री। yeah, so that means there's not guarantee. Okay. So I could spend thousands of dollars, get my education, and spend thousands of hours studying, and in the end, no money, right? Not a lot of money. So what I'm saying is, we would you still push that student to go to college knowing that it's not a guarantee? Would you still push them? ओके, तो अगर ये पॉसिबल है कि एकदम पूरी पढ़ाई करने के बाद उनकी बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल रही और वो पैसा नहीं कमा रहे, तो भी क्या आप उन्हें पुश करेंगे कॉलेज जाने के लिए या नहीं? क्योंकि गारंटी तो कोई है ही नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो क्या तब भी आप पढ़ाई के लिए मजबूर करेंगे उनको? तो यहाँ पे लिख रहे हैं यस एंड पीपल आर राइटिंग देयर इज Right. ऑलवेज दिस होप। Right. I saw somebody put there's no option. You have to. and and that's the thing. See, when you feel strongly about something and you believe that it's important and it's essential, you're going to overcome the objection because you believe that it's absolutely important for them to do it. अगर आप बिलीव करते हैं, पैसा भी नहीं मिला, इतने सारे नौकरी भी नहीं मिली और इतने सारे पैसे आपने लगा दिए, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि ये जरूरी है, तो कुछ भी करके आप उन्हें कन्विंस करेंगे। एंड पीपल आर राइटिंग ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। Yeah, so this is the example that we're giving today, right? We gave the fish example last time, but this time we're going over the parallel between something that is not a guarantee, which is education. And I'm a believer in education. I believe you should go to college, get your education, spend the money, spend the time. I believe in that. But when somebody is telling me that they don't want to go to college, I still push them because I believe that it's essential. So I want you guys to think about that as we go through this training. तो अगर लोग कॉलेज नहीं भी जाना चाहते, तो भी आप और हम सब उनको कन्विंस करते हैं कि ये आपको करना ही है। कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की, लेकिन फिर भी कन्विंस करते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि कॉलेज जाके उनको वो चीजें मिल सकती हैं जो उनको शायद आगे लाइफ में और सस्टेन करेंगी, उनके फ्यूचर को बेटर करेंगे। So let's move on. So we're looking at this now, the core beliefs for selling USANA. This is what I think. I'm going to share with you what I believe. Okay. You want to translate that real quick? So I'll share with you guys what I believe. सो यूसाना के साथ क्या कोर बिलीफ होने चाहिए, और माइकल अब हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो किस में विश्वास करते हैं। तो Right. ये So there's माइकल two, बिलीफ है। yeah, so two areas, right? Health and wealth, the business and health. So I believe that everyone's health is in danger. सो माइकल कहते हैं दो एरियाज हैं, एक हेल्थ का है और एक वेल्थ का है, बिजनेस एंड हेल्थ। और वो ये कह रहे हैं कि सबकी हेल्थ में डेंजर हो सकता है, I believe that everyone's finances are in danger. सबके फाइनेंस भी डेंजर में है। Okay, so because I believe that, I'm able to speak a certain way. अब क्योंकि मैं उसमें विश्वास करता हूं, तो मैं एक तरीके से इस बारे में बात कर पाता हूं। So because I believe that everyone's health is in danger, I believe that supplementation is essential.
क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि सभी की हेल्थ डेंजर में है, खतरा है उनको, इसलिए मुझे लगता है कि सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। I believe that residual income is essential. मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो साइड इनकम, साइड हसल से रेसिडुअल इनकम आती है, वो बहुत बहुत जरूरी है। आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं, और भी चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। So, because I believe those things, then I believe that USANA has the best products and that USANA has the best opportunity. So, all of that, I believe all of that. क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हेल्थ पे खतरा है और वेल्थ पे भी खतरा है, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सप्लीमेंटेशन जरूरी है और एक एक्स्ट्रा साइड इनकम बहुत जरूरी है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है यूसाना में कि यूसाना के पास बेस्ट प्रोडक्ट है और यूसाना के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। So, that means that everybody is a prospect to me. Everybody. There's not one person that it's not for. Just like education, the product of education, is it for everyone, for every child, every single child? Yes, जैसे right? एजुकेशन जो है एक प्रोडक्ट है, हर बच्चे के लिए है, सबके लिए है, बिल्कुल वैसे ही यूसाना की अपॉर्चुनिटी माइकल के हिसाब से सबके लिए है। सबके लिए, क्योंकि सबको अपनी हेल्थ चाहिए और सबको अपने लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिससे उनको एक रेसिडुअल इनकम मिलती रहे। Right. So, हर having कोई said this, प्रोस्पेक्ट है, आपको ये मान के चलना है कि जो आप जिससे मिल रहे हैं वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, या तो हेल्थ के एरिया में या वेल्थ के एरिया। so because I believe this, right? That's why I'm able to overcome the objections. If you don't believe this, it's hard because it goes back to the education example. Everybody here believes you at least have to graduate high school. At least. Well, I believe you at least have to take the essentials. At least. सो जैसे कॉलेज का वो एग्जाम्पल था कि सबको ही विश्वास करते हैं, तो इसी तरीके से आपका ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। और उसमें भी कॉलेज के लिए क्या एग्जाम्पल था कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन, किसी ने इधर चैट पे भी लिखा कि और कुछ नहीं तो अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करिए। तो बिल्कुल वैसे ही हेल्थ के मामले में एटलीस्ट अपने असेंशियल सप्लीमेंट्स को तो जरूर लीजिए। वो असेंशियल है, मतलब एटलीस्ट इतना तो बेयर मिनिमम सबको करना है। Right. So I see it the same way. So when somebody says it's expensive or I don't need supplements, I believe no, no, no. It's worth it. You need supplements. It's you see what I'm saying? Like it's like a child telling me I don't need college. It's the same thing for me. I don't understand. Like they're lost. They're confused. They don't understand. Okay? Because I believe that everyone's health is in danger. Now, the saying is everyone's health in danger. Is that a fact? Well, we'll talk about that in a second, but you want to translate that? या तो जब लोग अपने हेल्थ के लिए बोलते हैं वो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, नहीं, प्रोडक्ट वर्थ इट है, उनमें वैल्यू है। जैसे बच्चा बोलता है मुझे कॉलेज नहीं जाना है, बट आप उसमें वैल्यू दिखाते हैं। सो इट्स लाइक द सेम वे, बच्चा बोल रहा मुझे कॉलेज नहीं जाना, बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे ये पैसा ही नहीं खर्च करना, तो आप उसको वहां पे उसकी वैल्यू दिखाते हैं। Right. So is everybody's health in danger? Let me tell you this. If you've been following Invisible Miracles, Dr. Wentz's book, highly recommend it. Okay. I think it's going to give you an idea of how the human body works, but is our health in danger in some ways? And the answer is yes. It's in danger every single day. Free radical damage, stress, pollution, just there's so many things going against us, right? Even genetics, all of that. So I think that everyone's health is in danger. We need to take, at the very least, the essentials. I believe we're not getting them from our diet. I don't believe that we are. Go ahead. तो अगर आप ये मानते हैं कि सबकी हेल्थ डेंजर में है, इसको सपोर्ट करने के लिए जो सजेशन है वो है यूसाना में डॉक्टर वेंस की जो बुक है इनविजिबल मिरेकल्स, और हम सबके पास उसकी
सॉफ्ट कॉपी है, मैं विक्रांत आंचल उन लोगों को बोलूंगी कि कम्युनिटी ग्रुप पे उसको हम जरूर एक बार पोस्ट करें। प्लीज गो थ्रू इट, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे किस तरीके से फ्री रेडिकल, स्ट्रेस, पोल्यूशन, और इसके साथ साथ जो हमारा लाइफस्टाइल है उससे कैसे हम हेल्थ को डेंजर की तरफ मतलब लेके जा रहे हैं। एंड जो हमें चाहिए शायद वो हमें हमारी डाइट से मिल नहीं रहा, इसलिए बेसिक एसेंशियल्स आपको लेना जरूरी है। Right. So supplementation is essential. It goes back to that. And then USANA has the best products. So because all of that is lined up for me, it's it's going to come when I speak. I can say we can say the same thing to overcome an objection, but it might not be received the same way. It's about what you believe when you speak with that confidence. You speak with the conviction. That's a big part of overcoming an objection. Not what you say necessarily, but how you say it. सो आप भी वही चीज बोलेंगे, मैं भी वही चीज बोलूंगी, माइकल भी वही चीज बोलेंगे, लेकिन जो सुन रहा है वो कैसे परसीव करेगा वो अलग है, क्योंकि आपके बोलने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, माइकल का तरीका अलग है। अगर हम फुल कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ बोलेंगे तो उसका परसेप्शन अलग पड़ता है, और अगर हम खुद ही लो कॉन्फिडेंस में बोलेंगे तो वो कहेंगे अरे ये खुद तो श्योर नहीं है, हमें क्या बताएंगे, राइट? सो इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। ये जरूरी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि आप वो कैसे बोल रहे हैं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Correct. So, anyways, we'll move on from this, but I want you guys to look at this chart because when you're training your team, see if this applies. If it does not apply to you or to them, then overcoming the objections is going to be very challenging. अब जब आप अपनी टीम्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पेशली ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करने के लिए, इस चार्ट को ध्यान से अपने दिमाग में रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर ये आपके लिए अप्लाई नहीं करता है, अगर आप इस चीज को बिलीव नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए यूसाना के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। Okay, let's go over this approach really quick. And this is something that will help you whenever you have an objection and you want to overcome it, but you don't know. Like you might get an objection that you're not familiar with, or you might get an objection that you are familiar with. But how do you start to answer the question? How do you approach it? That's what this is going to help you do. तो ये जो अप्रोच है, ये क्वेश्चन का आंसर देने को बिगिन कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, ये उसमें मदद करती है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, या आपने पहले सुना है वो ऑब्जेक्शन, या आपने नहीं सुना है, बट सवाल का जवाब देना किस तरह से देना है, ये अप्रोच आपको वो सिखाएगी। Right. It's called feel, felt, found. It's easy, okay? Feel, felt, found. Any objection you can answer this way. Almost any objection, actually. Almost any objection you can answer this way. So, example, if somebody says, I don't have the money to join, you could say, I know how you feel. I've felt the same way, but I found out that if you do this, you can invest. Make sense? So it's the three steps, right? Feel, felt, found. सो इस अप्रोच का नाम है फील फेल्ट फाउंड। एंड एज एन एग्जाम्पल, फील, मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा लग रहा है। इनफैक्ट पर मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था जब मैंने इसके बारे में सुना। और पता है क्या, मैंने देखा कि अगर मैं इस तरीके से करूँ तो ये ऐसे बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई बिजनेस के लिए बोले नहीं मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा लग रहा है इस इन्वेस्टमेंट के बारे में या इस बिजनेस के बारे में सुन के, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं ऐसे इन्वेस्ट करूंगा तो इससे मेरे पास इतने पैसे और अवेलेबल हो सकते हैं आगे के इन्वेस्टमेंट में। So, yeah, so this is where your testimonial is important.
your story, how you did it. So, for example, for me, if somebody said, I don't have the money, I would say, oh, I know how you feel. When I first started, I felt the exact same way. But I found out that I could put some on my credit card. So I put a few credit cards together and I invested into my business. See, that was my way to overcome that objection. सो आपकी अपनी स्टोरी जो है, आपने कैसे शुरू किया, आपने क्या क्या चीजों को ओवरकम किया, ये यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे पास नहीं है, तो आप बोलिए जब मैंने भी शुरू किया था मेरे पास भी नहीं था। आई फेल्ट द सेम वे, मेरे साथ भी बहुत मुश्किल हुआ। फिर मैंने कहीं ना कहीं से ये जुगाड़ करके ये किया, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया, एंड उसके बाद आई वॉज इजिली एबल टू पे बैक दिस एज माई डेट। मेरी ये डेट्स थी, ये लोन थे, और ये कर्जों को अब मैं पे कर पा रहा। Right. So, and it can be for anything, right? Like if somebody says, oh, yeah, I don't think I need vitamins. I know how you feel. When I first heard about USANA, I felt the same way, but I found out that we don't get enough nutrition from our food. तो Does that अगर make sense? आपसे कोई कहता है कि भाई मुझे विटामिन्स की कोई जरूरत नहीं है, तो आप भी बोल सकते हैं मेरे को बिल्कुल ऐसा ही लगता था आपकी तरह। फिर मैंने देखा कि अगर मैं अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने देखा कि ये सारा न्यूट्रिशन मुझे मेरी डाइट से नहीं मिल पाता है, एंड विटामिन्स उसमें मुझे सपोर्ट करते हैं। So sometimes your testimonial may not work. Let me give you an example. Let's say somebody told me their objection. I don't have time to build the business because I have two kids and I don't have enough time. I cannot say, I know how you feel. I felt the same way because I don't have kids. Okay. सो So, माइकल के so बच्चे नहीं है, अगर माइकल से कोई आके ये कहे कि ओ आई डोंट हैव टाइम, मेरे दो दो बच्चे हैं, मेरा सारा समय तो वहां पे चला जाता है, तो माइकल उनको ये नहीं बोल सकता आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मेरे भी दो बच्चे हैं, क्योंकि उनके है ही नहीं। तो हर समय नहीं, बट ज्यादातर। right. So this is where you could use somebody else's testimonial. This is why it's important to collect stories. Remember the saying, facts tell and stories sell. I'm not sure how that translates, but the stories are going to sell more than the facts. So when somebody is talking to you about an objection, you need to have a story ready. Let me give you an example. Let's say, for example, somebody said they had kids. I could say, I know how you feel. I have a friend in my USANA business that felt the exact same way. They have two kids and they didn't have time, but now they are full-time USANA and they can not go to work anymore because they invested time into their business. Does that make sense? I'm using feel, felt, found, but with somebody else's story. तो सारी स्टोरीज आपकी नहीं होंगी, लेकिन जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपका ग्रुप है, वहां से भी आपको स्टोरीज कलेक्ट करनी है। तो अगर आपको कोई दो बच्चों के लिए बोलता है कि मेरे पास टाइम टाइम नहीं है, तो आप उन फ्रेंड की, उन अपने ग्रुप मेंबर की बात करें जिनके एक्चुअली दो बच्चे थे, और कैसे उन्होंने शुरुआत करी, और आज वो इतना बड़ा बिजनेस यूसाना के साथ बिल्ड भी कर रहे हैं, एंड ट्रैवल भी कर रहे हैं, ट्रैवल विद यूसाना का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। सो आपको ये स्टोरीज कलेक्ट करनी है, तो आप बोल सकते हैं अंडरस्टैंड हाउ यू फील, एंड माय फ्रेंड आल्सो हैड द सेम एक्सपीरियंस, मतलब उनके पास भी सेम सिमिलर जैसा एक्सपीरियंस था। तो और जो सबसे बड़ी चीज माइकल ने यहाँ पे बोली कि फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल, यानी कि जो तथ्य होते हैं वो सिर्फ चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम उसको कहानी की तरह किसी को बताते हैं तो लोगों को समझ आती है, राइट? तो दैट्स ऑल। अगर आपके पास एक कहानी की तरह है, तो वो ज्यादा आप उसको बेच पाएंगे, और ज्यादा अच्छे से अगला उसको समझ पाएगा। Right. So I think this is key as you're overcoming objections. Let's move on. So here are the most common objections when it comes to supplements. As you can see here, I'll read them off really quick. They're too expensive. I can get cheaper vitamins at the store. I'm healthy and I don't need them. I don't believe in supplements. Let me think about it.
सो यहाँ पे जो कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो हम लोग हर रोज शायद फेस कर रहे होते हैं, वो बहुत महंगा है, दूसरे वाइटामिन्स हमें सस्ते मिल जाते हैं, इतने रुपए का मिलता है। मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। मैं सप्लीमेंट्स में विश्वास नहीं रखते, मैं तो सिर्फ अपने डाइट और न्यूट्रिशन में विश्वास विश्वास रखते हूँ, या फिर सोच के बताते हैं। So, how do we overcome these? If you're using Feel Felt Found, I'll just go over them really quick. They're too expensive. I know how you feel. I felt the same way, but I found out that investing into your health is the most important thing you can do in your life. I can get the vitamins cheaper. I know how you feel. I felt the same way, but I found out that you get what you pay for. When you go to the store, if it's cheaper, do you want to spend cheaper on your health? Make sense? I'm healthy. I don't need them. If somebody says that, I know how you feel. I felt the same way. But I found out that you can't get enough nutrition just from the food that you eat. There's not enough nutrients in the soil to make, anyways, and going on, right? I don't believe in supplements. I know how you feel. Felt the same way. When I first started, I didn't believe in supplements either, but I found out that taking them makes a difference. I'll think about it. I know how you feel. I felt the same way, but I found out that thinking about it is not going to change anything. The best thing to do is to try it and get that experience. So, anyways, feel, felt, found. Every single time it can always be used. लॉट ऑफ थम्स अप कमिंग अप, बट यस, अगर कोई आपसे कहता है कि बहुत महंगा है तो आप प्लीज उनको बोलिए कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, लेकिन अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना एक्सपेंसिव नहीं होता। कोई आपसे ये कहता है कि विटामिन बहुत सस्ते मिलते हैं, तो जो आप पे कर रहे हैं आपको वही चीज मिलेगा, राइट? सस्ता डालेंगे तो सस्ता मिलेगा, और अच्छी चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक्चुअली आपके हेल्थ को बेटर करेगा। आई एम हेल्दी, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन आज मुझे पता चलता है कि शायद आज के सॉइल में भी उतना न्यूट्रिशन नहीं है जो हमसे पहले वाली जनरेशन को मिल रहा था। आई डोंट बिलीव इन सप्लीमेंट्स, यस, मेरे को भी ऐसा ही लगता था, बट मैंने देखा कि दैट्स द राइट वे टू मेंटेन। अगर मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ तो डाइट के साथ सप्लीमेंट मिलके मेरी हेल्थ और बेटर हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं वो सोच के बताता हूँ, जी, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं सोचूंगा, लेकिन सोचने से कुछ भी बदलेगा नहीं। बदलेगा कब? जब हम उसको ट्राई करके देखेंगे। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि मैंने भी इसको ट्राई करके देखा। पहले मैंने सोचा था कि मैं भी सोचूंगी, लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया तो मेरी ओपिनियन बदल गई। Right. So I'm just giving you guys, once again, the fundamentals. There's a lot that you can say to overcome these objections, but I'm giving you basics. We can do more advanced training to really go over the objections, but I want to start with fundamentals because once you understand the basics, you can always add on top of that. We don't want to go over very detailed overcoming objections on each one because if you don't have the fundamentals, I don't think it's going to work out to train other people in your team and to really, really grasp the concept of overcoming objections. Go ahead. तो आज हम Okay. ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम आगे और एडवांस ट्रेनिंग कर सकते हैं डिटेल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, राइट? Right. So the commन objections for direct selling. Here's some common ones, some of the most common ones. Now, some of you guys are thinking, how do I know this? If you've been doing this business long enough, you're going to hear the same objections. I've been doing it for over 20 years, and you know what? The objections are the same. They're still the same. 20 years ago, people were saying the same thing. तो ये कॉमन ऑब्जेक्शन है डायरेक्ट सेलिंग के। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि माइकल को ये कैसे पता है, क्योंकि वो 20 साल से हैं इस बिजनेस में, और वो ये कह रहे हैं कि जो 20 साल पहले ऑब्जेक्शन थे आज भी वही ऑब्जेक्शन है। और अगर आप भी इस बिजनेस में इतने समय से हैं तो शायद आपको भी यही ऑब्जेक्शंस आते होंगे। Right. So I don't have time. I'm not a salesperson. It's a pyramid scheme. I don't know anyone to sell to. I've tried it before and it didn't work. मेरे पास समय नहीं है, मैं सेल्स पर्सन नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल पिरामिड स्कीम है, मेरे लिए नहीं है, मैं किसी को जानता ही नहीं जिसको मैं सेल कर सकता हूँ, मैंने पहले ट्राई किया था, ये काम नहीं करता।
So whenever people go over these types of objections, feel felt found can still be used. Same, okay? It can still be used. And we can go over it a little bit more. I'll go over a couple of these in detail, just a little bit more to kind of help you guys out. But you guys know the feel felt found can still be used. यहाँ पर भी आप फील फेल फाउंड यूज कर सकते हैं और हम एक दो एग्जाम्पल को माइकल अभी डिटेल में बताएंगे. So here's the thing when people talk about is it a pyramid scheme or it's a pyramid scheme, right? That's the objection. One thing you अगर really want to get familiar with is showing how USANA is a publicly traded company. Get comfortable with that. It's what makes USANA different from so many direct selling companies that are out there. Most direct selling companies are privately held companies, and there's nothing wrong with that. But what I'm saying is the fact that we're a public company on the New York Stock Exchange really adds validity to our entire business operation. तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये पिरामिड स्कीम है, तो सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो ये कि यूसाना जो है नास्डैक पे पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है. बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो कि प्राइवेटली हेल्ड होती हैं. इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी द फैक्ट कि इस तरह की कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है, ये हमारे बिजनेस को और ज्यादा वैलिड बनाती है और उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. एंड माइकल, आई जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ एन इंडिया एग्जांपल आपके लिए भी, कि बहुत सारी हमारे मॉडल के कॉपी कंपनीज जो इंडिया में आती हैं, 2 साल 4 साल 5 साल रहती हैं और उसके बाद शायद उनका नाम भी नहीं दिखता, राइट? सो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी पे इंसान दिल खोल के विश्वास कर सकता है. माइकल, आई एडेड जस्ट अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव. Got you. Yeah. Another one is I've tried before and it didn't work. Okay. I like this objection because you want to put things into perspective. Okay. One thing that I like saying when people say, I've tried this before and it didn't work, I usually say things like, hey, there's people who tried going to the gym and it didn't work. Is it because the gym doesn't work or is it because they didn't work it properly? And it helps me put things into perspective. So when they say, yeah, it's probably them, not the gym. Okay, same here. Make sense? I know how you feel. I felt the same way. But what I found out is that it's not the business that's the challenge, it's usually the individual and their approach. So let's work on that. सो कई बार लोग कहते हैं कि मैंने पहले ट्राई किया और ये काम नहीं करता. सो फील फेल फाउंड यहाँ भी काम करेगा एंड यहाँ पे आपको उनको एक पुराना सिचुएशन के साथ आप उनसे बात कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिम जाते हैं बट यू नो काम नहीं किया, या उनके लिए वर्क नहीं किया, राइट? तो आप उनसे पूछिए, तो क्या जिम खराब है, या उनकी अप्रोच खराब है, या उन्होंने प्रॉपर कंसिस्टेंटली अपने रेप्स नहीं किए और अपने जो भी उसको वेट्स को बढ़ाया नहीं, अपने ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाया. आप उनसे ये सवाल पूछिए, तो आई एम श्योर वो भी वापस आके यही कहेंगे, नहीं जिम खराब नहीं है, शायद उनकी अप्रोच ठीक नहीं थी, राइट? सो यस, बिजनेस Yeah. इज देयर, द बिजनेस इज वैलिड. काम नहीं किया, शायद हमारी अप्रोच को बदलने की जरूरत है. And if you want to add some light humor, I'd say, hey, let me give you an example. I've been driving a car now for about 25 years. I was in an accident. Did I keep driving or did I stop driving? I say, I keep driving, right? Just because I had a bad experience doesn't mean that I should stop. It just means that I had a bad moment. I can learn from that moment. I can find out what I did wrong. I can improve, and then I can go out there and continue. It's the same thing here. तो आप लोग जो भी आप में से जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं, राइट, एंड कभी ना कभी किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उसके बाद हम गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? शायद नहीं.
वो एक बैड मोमेंट था, खराब समय था। हम सीखते हैं उस मोमेंट से, मैंने क्या गलत किया, क्या वो सिचुएशन थी, मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन गाड़ी चलाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो एक स्किल है। एंड दैट समथिंग दैट टेक्स मी टू प्लेसेस, और मुझे ये चाहिए। सो जरूरी वो है कि आप उससे सीखें कि मैंने उस समय क्या गलत किया। So back to these very, very common objections. I don't know anyone to sell to. That's a very common objection, and it holds people back because it goes back to the beliefs, right? Do they believe that people's health is in danger? Do they believe that people's finances are in danger? If they don't believe that, then they think, I don't know anyone to sell to. Make sense? Because they don't believe that anybody's health or finances are in danger. If you believe that everybody's finances and health is in danger, then you know so many people to talk to. तो अगर आपके पास कोई आके ये कहता है कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिसको मैं सेल कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है शायद कि उनको ये विश्वास ही नहीं है कि लोगों की हेल्थ में खतरा है, लोगों के फाइनेंसेस को खतरा है, उनको एक्स्ट्रा इनकम शायद चाहिए ही नहीं। अगर आप इस चीज में विश्वास रखते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको कि आप सेल कर सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी। So I think if we do another training, we can go into each objection and role play the objection to practice it. But before we do that, I want to make sure you guys have it down. Feel, felt, found, and common objections. सो माइकल कह रहे हैं कि डिटेल ट्रेनिंग से पहले वो चाहते थे कि आपके पास फील फिल फाउंड के बेसिक रेडी हो ऑलरेडी, बिफोर वी गेट इनटू दी डिटेल ट्रेनिंग आपके पास काफी सारे ऑप्शंस और सॉल्यूशंस रेडी हो। Right. So just summing it up, summarizing here, too expensive. When you have a question of price, it's important that you show value because it's never a question of price. It's always a question of value. And I'll give you an example. I remember back in the day when people started buying cell phones, a cell phone, you can get a cell phone for like $100. It was simple. You flip it and you push the buttons and you dial, right? Now a phone like this is $1,000, 10 times more money for this. But is there 10 times more value than my phone from 15 years ago? Absolutely. This is worth 100 times more than my phone from 15, 20 years ago. तो अगर कोई एक्सपेंसिव बोलता है, उनको वैल्यू दिखानी बहुत जरूरी है। अगर आप पहले का समय याद करें, जब हमारे पास वो बटन वाले फोन आते थे, जो कि आज भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आज सबके पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, जो कि उन फोन से जो 10 साल पहले 15 साल पहले मिलते थे, आज शायद 10 टाइम या 15 टाइम्स ज्यादा के हैं। और वो बटन वाले फोन शायद आज भी मिलते हैं 5-6 हजार के, लेकिन कुछ फोन ऐसे हैं जो कि शायद लाख लाख रुपए के भी हैं, उससे ऊपर भी जा रहे हैं। बट क्या उसमें वैल्यू दिखती है? शायद 100 टाइम्स मोर, और इसलिए लोग ऐसे फोन ले रहे हैं। Yeah, I mean, I'm not exaggerating. Like, is it worth more than 10 times what it was 15 to 20 years ago? Yes, like I can do my video calls with my family. I can book a travel ticket. I can book an Uber. I can build my business from here, make money from here. I can run my stock portfolio. Like, this tool is worth 100 times in value, but only 10 times in price. That's why people buy it. सो ये जो टूल है आपका फोन, स्मार्टफोन जो आज आपके पास है, 100 टाइम्स वैल्यू में ज्यादा है, क्योंकि शायद आप इससे कैब बुक कर सकते हैं, आप इससे अपना ट्रैवल बुक कर सकते हैं, आप इससे अपना स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने पैसे इससे बना सकते हैं। 100 टाइम्स वैल्यू आपको मिल रही है।
प्राइस शायद 10 टाइम्स ज्यादा है आज से 10-15 साल पहले से। So, in summary, always talk about value. When people talk about price, I talk about value immediately. I don't get into a pricing debate. I get into a value debate. तो जब आपसे कोई एक्सपेंसिव है ये बोले, आप उनके साथ बहस में ना पड़े कि ये डिबेट में जा रहे हैं जी, प्राइस हमारा इतना महंगा नहीं है, ये नहीं। आप उनसे वैल्यू की बहस करें कि आप वैल्यू क्या दे रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में और बिजनेस में, उसकी बात करेंगे तो इट बी easier फॉर यू टू हैंडल, रादर देन ये कि ये 100 रुपए का और ये 2000 रुपए का है। इसमें मत जाइए, आप वैल्यू की बात करें। Right. When people talk about time, you want to show flexibility. I don't talk about, oh, yeah, you can make more time. You can't make more time. There's only 24 hours in a day. So, whenever people bring up time concerns, make it about flexibility, not about making more time. तो समय के बारे में जब लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उनको ये मत बोलिए कि आप उनके लिए समय और खरीद ले आएंगे कहीं से, नहीं। समय तो सबके पास 24 घंटे का ही है, बट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करिए। या हाँ, कैसे आप अपने टाइम को और बेहतर यूज कर सकते हैं। Right. So, not a salesperson, that's where you really get into sharing stories and testimonials. सो अगर कोई ये बोले कि मैं सेल नहीं कर सकता, तो आप अपनी स्टोरी बताइए और अपने ग्रुप में और लोगों की स्टोरी से सीखिए और उनके बारे में उनको बताइए। People talk about pyramid or any type of legitimacy things, educate about publicly traded. तो अगर आपसे कोई पिरामिड स्कीम, नेटवर्किंग, इन सब चीजों के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो प्लीज आप उनको यूसाना के पब्लिक लिमिटेड होने के बारे में एजुकेट करिए। When people say they don't know who to talk to, just show them people in the room, right? Give them your own story. Teach them how to build a network. Talk about, my friend called me that I hadn't seen in a long time, or I signed up two people that I used to work with in the past, or however. But when people don't have a network, teach them how to build a network. जिन लोगों के पास नेटवर्क नहीं है उनको सिखाइए कि नेटवर्क बनाना कैसे है। किसी मेरे फ्रेंड ने, जिससे मैंने कुछ सालों से शायद बात नहीं करी, उन्होंने मुझसे बात करी, तो मैंने उनको साइन किया। कुछ लोगों के साथ मैं बहुत पहले काम करता था, मैंने उनको साइन अप किया, राइट। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स एक रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से काम आ सकती है। So we'll go ahead and conclude there. I want to make sure we're respectful to everybody's time, but wanted to go over just some basics like this, talking about overcoming objections, feel, felt, found, and really getting the core beliefs. If you guys want to dive into this deeper, I think we can do something very specific now that we have this. I'll give all of the slides over to the team. You guys can use this, train your people with it if you have to. That way, if we do another training, we don't have to go over basics. We can just go straight into the more complicated, complex objection handling. That Thanks, would guys. bring सबने ये, everyone is writing the same, माइकल। बट या आपके लिए मैं बोल रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि हम इन सभी ऑब्जेक्शंस को डीप डाइव करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज चैट पे लिखिए, सो दैट माइकल को भी पता चल जाए कि नेक्स्ट ट्रेनिंग हम डिटेल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, वी कैन टेक दैट। सो यस, एवरीवन is writing that, Michael. I mean, this is really helpful, and these are the common objections that all of us face all the time. We were in a meeting yesterday, and of course, we got something similar yesterday while we were meeting a few people down south. Awesome, Okay, awesome. just as a Okay, perfect, guys. Well, I'll share the slides with you guys. Like I said, let me know if you guys want to do anything more advanced. I think personally, if you've been doing the business now for a while and you have a team of maybe 4 or 5 people in your team, you're handling the objections for your own prospects. But the way I got better was I was also handling the objections of my people's prospects. So when they brought their friend, I was helping them, right? Let's say I have a downline and they're bringing 5 guests. At the end, I'd say, awesome. Do you see a way to make money here? Great. Do you have any questions or concerns? If they say no, say, awesome. Let's get you started. If they say yes, what are your questions or concerns?
I have questions about this, this, this. If I answer all of those questions, are you ready to join the team? Yes. Okay. You see, it's like it's the same thing. So we'll go over how to overcome the objection, how to close, but wanted to give you guys the fundamentals today. So looking forward to some more training in the future. And yeah, let me know if there's anything else I can do. तो माइकल कह रहे हैं कि वो एक्सपर्ट बने कैसे, ऑफ कोर्स अपने लिए जो वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे उनको जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो हैंडल करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ पूरे टीम के साथ भी क्वेश्चंस को, उनके ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर करके वो इसमें और बेटर हुए. सो उनका यही सजेशन है कि आप ना केवल अपने ऑब्जेक्शंस हैंडल करिए बल्कि अपनी टीम के साथ मिलके उनको भी हेल्प करिए, राइट. एंड एक सवाल जो आपको जरूर पूछना है कि अगर मैं इन सब चीजों का आपको सोल्यूशन दे दूं तो क्या विल यू बी रेडी टू मूव फॉरवर्ड. एंड यस, that's what Michael is saying ki we will get into very soon, deep dive into objection handling, and that's it. So thank you, Michael. Everyone is writing thank you for giving this info. People, No, thank Michael, you guys. Honestly, it's a pleasure seeing you guys grow and develop. I think that India is obviously a global superpower in the market, so we need you guys to do well, okay? We need you guys to go out there and really, really move the needle in USANA. I think you can, and I think that you will. All right, guys, take care. thank you, Michael. Yes. So thank you everyone for joining in, and good night to all of you. Thank you. Bye bye. And we'll share the presentation. Don't worry.